So dear students, we were studying in previous topic the tense. What is tense? Yeah. Yeah. The word tense has been derived from the Latin word tempus, which means time. That means the tense is all about the time. Okay. And then we studied in English, there are how many tenses? Three. There are three tenses. And each tense has how many parts? Four parts. Okay. Once again, how many tenses are there? There are three tenses and it has how many parts? Four parts. That means each tenses it has four parts. So 3 into 4 is equal to 12. Very good. What are three tenses? Here. Present, past, future. Present, past, future, and it has four parts. Present has how many parts? So 4. And past? So 4. And future? So 4. Sit down. So once again listen carefully. Dear students, there are three tenses in English language and it has four parts. So that means 3 into 4 is equal to 12. Alright. To learn tenses, first of all, we must know subject. You have forgetting. See the forgetting skills. Rishika, I already taught in the previous class. This is what I am today repeating it again. To make tenses, first of all, we need subject. Okay. Once we know the subject, after that, we must know other things. And then I asked you question that day and today also I am going to ask you the same question. Why should we know the subject in order to make tense? Come here, Rishika. Come here. Come here soon. Listening skill. Why should we know subject before making tense? So that we can make sentence. That we can make sentence. What else can be the other answers? It means you are not. Actually, stand. You are not. टेंस को पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट क्यों पता होना चाहिए? सब्जेक्ट इसलिए पता होना चाहिए जब हमें सब्जेक्ट का पता होता है तो वैल्यू को पता लगेगा. कैसे लगेगा पता? जैसे कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उससे हमें सब्जेक्ट का पता लगेगा. कौन सा यहाँ पे आई लगेगा, बी लगेगा, दे लगेगा, कौन क्या लगेगा. हाँ, you tell. Sit down. Very good. You tell. In English. If we know the subject, so we can use helping verb. Sit down. Sit down. Not studying perfectly. So, first of all, what kind of tense is this that will be determined by the subject? Because if subject is singular, then we will be making that kind of sentence. If subject is singular, that will give us idea what kind of helping verb should be using or what will be the tense of present indefinite tense. What did I say? Stand. Come here. What did I say? You said if we want to make sentence, we must know the helping verb. Now, my question is, before we learn tenses, why must we know subject or why should we know the subject words? The reason is that we must know the subject words because to make the tenses, the subject word will help us to make what kind of tense is this. Now, for example, if we have the singular subject, that will make us aware of if we are making present indefinite tense, that will help us to make the first form of verb with ses. If the subject is singular, that will help us to use all the singular helping verbs with that particular subject in that tense. If the subject is plural, then we have to follow in the tense plural helping verbs.
or else in present indefinite tense we need to make sure that we don't use ses with the first form of verb if the subject is plural. All right, this is what when we talk about learning tenses, first of all we must know that subject is singular or plural, because based on the subject our helping verb will determine, our tenses also will determine what kind of verb should be using here, whether there will be ses with the first form of verb or not, it will be determined by the subject. All right, that's why to learn tenses, first of all we must know the subject. Now kinds of subject, what kind of subjects do we have in English language? Rijul, what kind of tenses, sorry, come here, what kind of subjects do we have in English language? What kind of subjects do we have in English language? What kind of subjects do we have in English language? 7. What kind of subjects are they? He, she, it, I, we, you, they. Okay, sit down. Rishika, come here. What kind of subjects do we have in English language? So we have 7 type of subjects. Several type of. 7 type, है ना? If I am asking you what kind listening skill, look at here, मैं listening में ये चीजें lecture, इसको बोलते हैं lecture attending. अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखेंगे तब तो फिर आपको पता हो जाएगा, मैंने पिछली बार लिखा है, अब उसके बाद लिख के समझाऊंगा. फर्स्टली 10 मिनट का लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर से कितना समझते हैं आप? लेक्चर से क्या, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कुछ वर्ड समझे, कुछ सेंटेंसेज आ रहे हैं आपको, कैसे सुनने से आ रहे हैं, है ना? So now I am asking question, what kind of subjects do we have in English language? Actually we have 2 kinds of subjects in English language. Number 1 is called singular, number 2 is called plural. There are 2 kinds of subjects in English language. Before we begin learning tenses, first of all we want to learn about the subjects in English language. Why? Because to make tense we must know the subject. Subject will help us to make the tenses, to make the tenses for example, or in the sense means the subject will help us to use the helping verb according to the sense of subject. If the subject is singular, we have to follow the singular helping verb. For example, is, was. If subject is plural, then we have to follow the plural helping verb. For example, are, were, have. These are the plural helping verb. And another thing is that it will help us, subject will help us to make the tenses according to the sense. The subject will help us to make present indefinite tense. There is a rule for the present indefinite tense. The rule is all about if the subject is plural, so we never add ses with the first form of verb in the present indefinite tense. The first tense we have present, and the first tense of the present, the first part is present indefinite. Second tense we have past, and the second tense, the first part of the first column, the first tense is called past indefinite. Tense of the first column is known as a future. The first tense is future indefinite. This is what we studied in the previous class. Did you understand now? Yes, sir. So first of all, to learn tenses, we must know subject words. What are the subject words? And there are 2 kinds of subject words. There are 2 kinds of subjects in English language. We would say that the singular and plural. And then if we say the first person, second person, third person, there are first person, second person and third person. Is it clear now? After that, to know the tenses, we must know helping verb. How many helping verbs are there? Stand now. How many helping verbs are there in English language? English language में helping verb कितनी है? कितने? 24. करवाई नहीं है helping verb. वो ध्यान देना है चमनलाल बच्चों, आपने बच्चे क्या करना है, डरना नहीं है ना, पहले दिन आए सुन लेना. अभी आपको नहीं पढ़ाया तो आपको पता नहीं है ना, जब पढ़ा देंगे ना उसके बाद बोला सर अब पूछो, जब नहीं आएगा तो तब ठीक है, बैठ जाइए. आपको ध्यान देना है इंग्लिश में 40 ही तो यस सर का मतलब नहीं है. सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हेल्पिंग वर्ब कितनी है इंग्लिश में,
24 है वो हमने करवाई हुई है। इस, एम, आर, बॉज, वर, डू, डज, डिड, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to. There are 24 auxiliary verbs in English language. We must know it. Why? To make tenses, we use the helping verb also. And then we already studied in the previous class, the topic was all about how to use the is, am, are, was, were, how it has to be used in various ways, in 6 ways. Fine. So next thing, to learn tenses, we must know, number 3, to learn tenses, we must know verb. Clap for him. Sit down. दे रहा ये बच्चा, देखो ध्यान, तभी तो आए यहाँ पे। देखने वाली बात है, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वर्ब लगेगा, कुछ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। सो द थर्ड थिंग इज टू लर्न टेंसेज वी मस्ट नो वर्ब। टेंस को लर्न करने के लिए या टेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब आनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आने चाहिए, सब्जेक्ट कौन कौन से है। दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। 24 हेल्पिंग वर्ब याद करके लाना कल के लिए। ये छुपने वाले काम नहीं करना। मुझे समय नहीं लग रहा है, पढ़ना है और आप टॉप लेवल के बच्चे बनेंगे, क्योंकि आपके आगे भविष्य है बच्चों। अभी जब आएंगे ऐसे छुप छाप के करने वाले काम नहीं। मैम ने साइंस पढ़ा दिया, ठीक है, सर ने मैथ करवा दिया, फिर ठीक है, पर इंग्लिश की क्लास यहाँ पे एक ऐसी क्लास है जिसमें सारी चीज़ें करवाई जाती है। ग्रामर आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, लिसनिंग आनी चाहिए। लिसनिंग का मतलब मैंने कुछ बोला, बच्चों मैंने क्या बोला, पूरा नहीं बोलना है, उसमें से 2-4 शब्द ही बोल देना। जैसे आपने ब्रोकन में ही बोल दिया, जरूरी नहीं कि मेरे जैसे ही बोलो, टूटा फूटा ही बोल दिया, पर बोला तो बोला। वो बोला कैसे, आपने सुना लेक्चर, इंग्लिश में लेक्चर सुनने के लिए मिला, फिर उसमें से कुछ वर्ड्स लर्न किए, कुछ वर्ड्स याद रह गए। अभी अभी मैंने पूछा, किसके बारे में पूछ रहे थे, जिसका आंसर इसने दिया लड़की ने, क्या था वो वर्ड? हाँ, केयरफुली, है ना। हाँ, ढंग से जो भी बताया उसने। अभी देखो, चलो वैसे ही कोई हिंदी मीडियम से आए, सरकारी स्कूल से, पता नहीं है। केयरफुली, थोड़ी थोड़ी, केयरफुली, ब्यूटीफुली, है ना, डिटरमाइंड, टेंसेज, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं ना बच्चों, है ना। दीज आर द वर्ड्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो तीसरी चीज जो है इंग्लिश को जानने के लिए, लुक एट हियर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ना। उसमें वैसे 3 पर्सन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। कहने का मतलब है एक वचन और बहुवचन, बहुवचन बोलते हैं उसको। उसमें 2 भी आता है, 2 से ज़्यादा भी आता है। तो दूसरी चीज हमें जो है क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, है ना। चमलाल याद करके लाना हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, है ना। ये हो गई 24 हेल्पिंग वर्ब, खत्म हो गई। हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए हमें, क्योंकि ये लगेगी इज, एम, आर, वॉज, वर, किसमें? टेंसेस में तो लगता है ये। उसका तीसरी चीज हमें क्या होना चाहिए, हमें वर्ब आनी चाहिए। अभी आप सभी बच्चों ने वर्ब जो है ऑलरेडी लिख ली है, 30 वर्ब लिखी। वर्ब आनी चाहिए। वर्ब क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें वर्बें आएगी उतने ज़्यादा हम टेंसेस बना पाओगे। यदि हमें गो आ गई तो हम गो के ऊपर बना पाएंगे टेंसेस को, क्योंकि टेंसेस कितने हैं? 3 है। कितने पार्ट है उसके? 4 है। 4 के आगे इंटेरोगेटिव वगैरह में लेते हैं तो 72 हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं। तो यदि एक वर्ब आ गई तो एक वर्ब में ही हमको उतने बनाने आएंगे। यदि हम ज़्यादा वर्ब लर्न करेंगे तो ज़्यादा टेंसेस हम बना पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है, वी नीड सब्जेक्ट, वी नीड हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी नीड वर्ब। आफ्टर दैट वी नीड ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको अदर वर्ड भी कहते हैं, अदर वर्ड भी कहते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न फॉर learning tenses. Is it all right now? Fine. Now first of all Rijul will come here now. Rijul, yeah, speak loudly 23 forms of verb. 20. Start. Cut, put, read, Cut, read, do, did, done, go, went, gone, sing, sang, sung, write, wrote, written, come, came, come, speak, spoke, spoken, write, wrote, written, be, was, being, see, say, seen, fight, fought,
ठीक हो गई बच्चे भी, पहले से बहुत हो गया। लेट्स क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर रिजुल। चल मेरा बच्चा ठीक हो गया, चल बच्चे बैठ जा। अब लग रहा देखो अकेडमी के बच्चे हैं, ऐसे होने चाहिए स्टडी में। चलो कुछ तो ऐसे खड़ा कर दिया आपको तो, है ना। अब ये क्या है, फाइट फॉट फॉट का हो गया, और मैंने फाइट के ऊपर ही टेंसेस दे दिया। आई फाइट, आई फॉट, आई विल फाइट, आई एम फाइटिंग, आई वॉज फाइटिंग, आई विल बी फाइटिंग, आई हैव फॉट yesterday with Rishika, that's why I'm not talking to her, I don't know why she behaves sometime with me very badly, maybe she's your sister, sometime it happens at your home. All right, if you don't know the second form, the third form, then you won't be able to make the tenses. verb learn करनी है, होमवर्क बच्चों पढ़ना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम सरकारी स्कूल से आएंगे हमें नहीं होगा, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ है ना, कुछ भी नहीं है। ध्यान देना है जो जो चीज़ें करवाई जा रही है, ऐसे डफर होकर नहीं आना, बच्चों थोड़ा पता होना चाहिए। देखो जो मैंने लेक्चर लगाया मुझे याद रहता है कि मैंने क्या पढ़ाया पिछली क्लास में। 24 गुण हेल्पिंग वर्ब है, इसको याद है। देखो ये किसी बढ़िया से क्लास लगा रहा है, इसकी मम्मा का फ़ोन आया कि मैथ में तो ठीक है, बस इंग्लिश में सर ध्यान देना आपने, तभी तो मैंने पहले से बिठाए थे। बोला मैथ में नहीं है हमें टेंस, इंग्लिश में अभी तो इसको भी टेंस में परफेक्ट करवा रहे। अभी ये इंग्लिश में भी ध्यान देते थे, समझ जाता। फट करके इसने बताया थर्ड चीज़ है हमें वर्ब आनी चाहिए टेंसेस के लिए, फिर ऑब्जेक्ट दिशा को ही पता है। सो वर्ब ऐसे क्यों वर्ब, एकदम वर्ब का मतलब क्या है, ऐसे जैसे देखा ये वॉक, सी, राइट, है ना, ओके, डू, आस्क, पुल, पुल, है ना, पुश, ये सारी चीजें जो है फटाफट आनी चाहिए। इसको उठा दो बच्चे, ये सारी चीजें आनी चाहिए, है ना। जो देखा उसको सी बोलते हैं, है ना। जो लिया, धक्का दिया, खोला, पढ़ा, ये चीज फटाफट आनी चाहिए आपको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखने के लिए सी बोलेंगे, है ना, उठने के लिए स्टैंड बोलेंगे, समझने के लिए अंडरस्टैंड बोलेंगे, लिखने के लिए यहाँ पे राइट बोलेंगे। फिर ऐसे ऐसे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। सर यू राइट हियर, सर आई रोट, है ना। ऐसे छोटे छोटे से, ऐसे एकदम नहीं आएगी आपको इंग्लिश, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सर आई हैव रिटन थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, Come, can, come. Eat, eaten. एट, Eat, एट, ATE, एट, एट क्या हुआ, खाना. खाना हुआ, ध्यान देना, है ना। अब ध्यान दो यहाँ, लुक एट हियर नाउ, जो सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म में क्या आता है, जैसे गो वेंट हो गया, गया, या लगा उसमें. और क्या लगता है सेकंड, सेकंड इतना ही बोलना है ना। आई बात समझ, मैंने कितनी बार करवाया, आ ए ई की मात्रा लगेगी सेकंड फॉर्म में, समझ आई बात। सेकंड फॉर्म में क्या मात्रा लगेगी, आ ए ई की मात्रा। ऋषि का बेंट, ऋषि का गई, मात्रा लगी ई की, ऋषि का गई, है ना। ऋषि का बोली, ऋषि का स्पोक, रिजुल ने बोला, आ रिजुल स्पोक, है ना। मैंने पढ़ा, आई रेड। सेकेंड फॉर्म में हमेशा आ ए ई की मात्रा लगेगी। बोला, खाया, उठा, बैठा, रहे, है ना, आया, लड़े, वो लड़े, दे फॉट, है ना, बे लड़े। समझ में आई बात है। इसलिए मैंने आपको पूछा था एट क्या हुआ, एट का मतलब हुआ खाया, ईट का मतलब हुआ खाना, है ना, एट का मतलब हुआ खाया, है ना। मैंने अपना लंच खाया, आई एट माई लंच जस्ट नाउ, है ना। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट आज 11 बजे खाया, टुडे आई एट, पर वैसे हम एट नहीं बोलते, इसके लिए हम हैव बोलते हैं ना, हैव, HAVE, हैव। और इसका सेकंड में होगा हैड, टुडे आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 11 o'clock। समझ में ये बात है ना, ईट, एट। थोड़ा सा हमें क्या करना है, दिमाग को लगाना है। तो ये है हमारी टेंसेस की प्रक्रिया। फाइन। सो learning tenses will help you to learn 30% part of English language. So all the students must make sure that you learn the tenses very perfectly at Divya English Speaking Academy. All right. Now this is the time for the speaking competition, and then starting from Rijul.
Your verb is go, subject is I, make 12. Loudly. Yes. I go to school. I went to school. I will go to school. I am going to school. I was going to school. I will be going to school. I had Have. have I have gone to school. I had gone to school. I will have gone to school. वेरी गुड. सिट डाउन. लास्ट नहीं बोली. हाँ बोल दो. यही मैं चेक कर रहा था. कोई लेजी बच्चा होता ना. हाँ देखो, इसको भी बोलते चेक करने की एबिलिटी. जो लेजी है ना, जिसने नहीं पढ़ना है उसको तो फिर देखो उसने बैठ जाना. अब इसका मतलब क्या है? इस बच्चे में है पढ़ने की हिम्मत देखो. I have been going to school. I have been going to school. I will have been going to school. बैठ जा मेरा बच्चों. शाबाश. नेक्स्ट. Attacked. I attacked. I will attack. I attack. I am attacked. Attacked. I was Attacking. attacking. I was attacking. I will be attacking. I have attacked. I had attacked. I will have attacked. I have been attacking. I have been attacking. I will have been attacking. Okay, your subject is we, and verb is do, and complete subject is we do exercise every day. We do exercise every day. Loudly. We do exercise every day. We did exercise every day. We will do exercise every day. We are doing exercise every day. We were doing exercise every day. We will be doing exercise every day. We do exercise. We do exercise every day. We did exercise every day. We will do exercise every day. We are doing exercise every day. We were doing exercise every day. We will be doing exercise every day. We have done exercise every day. We had done exercise every day. We will have done exercise every day. We have been doing exercise every day. We had been doing exercise every day. We will have been doing exercise every day. Naman stands. Naman stood. Naman will stand. Naman is standing. Naman was standing. Naman will be standing. Naman has stood, Naman had stood, Naman will have stood, Naman has been standing, Naman had been standing, Naman will have been standing. Your Anmol laughs. Anmol bhaiya laughed. Anmol bhaiya will laugh. Anmol bhaiya was Is. तेरे से तो रिजुल ठीक कर रहा. चलो कोई नहीं. Anmol bhaiya was laughing. Anmol bhaiya will be laughing. Anmol bhaiya has laughed. Anmol bhaiya had laughed. Anmol bhaiya will have laughed. Laughs. Anmol laughed. Anmol will laugh. Anmol is laughing. Anmol was laughing. Anmol will be laughing. Anmol has laughed. Anmol had laughed. Anmol will have laughed. Anmol has been laughing. Anmol had been laughing. Anmol will have been laughing. Understood now? Yes, sir. So tomorrow's homework is again the oral test, the competition of speaking 12 tenses. Why old student? And for new student homework 10 3 फ्रॉम वर्ब लर्न करके लानी हो जाएगी 10 बजे. लर्न करके पता कैसे? गो, वेंट, गॉन. गो मीन्स जाना, राइट, रोड, रिटर्न. राइट मीन्स लिखना, रीड, राइट. 10 हो जाएगी लर्न कल के लिए ना. कल के लिए 10 लर्न करके लाना. आपने 20 लर्न करके लाना और 24 हेल्पिंग वर्ब मेरे को आते ही बता देना पहले कि हेल्पिंग वर्ब होती है. सर इज, एम, आर, वॉज, वर जो करवाई है आपको. कहाँ करवाई है? लिखी है. हाँ तो बस वो कल के लिए लर्न करके जाना है. 2 by 2 करके जो पीसफुली